Assalamu alaikum students. It's our last parts of speech, that is interjection, and we have discussed rest of the parts of speech in our previous lectures. So here's a quick look at those eight parts of speech basically, and it's the last one, the eighth one. The first one is noun. Then we discuss pronoun, then adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and all these words they um, com- combine to make our speech. So that's why they are called parts of speech. ठीक है, ये हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे स्पोकन हो या रिटन हो, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. सो रिटन में भी, स्पोकन में भी हम मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, और वो वर्ड्स किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई क्वालिटी भी हो सकती है. ठीक है, एंड इसी सब की बेसिस के ऊपर किसी इस इंग्लिश लैंग्वेज को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है. एंड वी हैव डिस्कस्ड 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. अब हमारा जो इट्स द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन, and it's quite an easy one among all the parts of speech, so we'll not take that much of time in discussing this one here. All right. um, Students, you already know that these parts of speech, they are divided into two major classes. All right, the first one is open class, and the second one is closed class. Open class parts of speech are noun, adjective, verb, and adverb. They're called open class parts of speech. They belong to open class because each day they keep on expanding and keep on growing. There are a language can have a huge number of words. It can have a huge number of nouns, adjectives, verbs, and adverbs. So with each passing day, with each single day, there are hundreds and thousands of words that add up to to the language, and that are added to the language basically. And these words are mostly nouns, adjectives, verbs, and adverbs. All right. So that's why they're called open class words, because they keep on growing and keep on expanding each day. While the closed class words are those that are specific and that are limited words, and we know them as pronoun, as preposition, conjunction, and interjection. They do not usually grow in language, because we there can be hundreds of names, but we if those names they are um, if those 100 names are the names of boys, so we'll use he for all those. So that's why we have a single pronoun for hundred and thousands of words. And in the same way, if all those words are of girls, so we'll only use she. All right. So this is how we can understand this, that uh, there are some words that are open class words that keep on expanding in language, and there are some other words that are closed class. So in open class we have four um, parts of speech: noun, adjective, verb, and adverb. While in the closed class, we also have four parts of speech: pronoun, preposition, conjunction, and interjection. All right. So here we go with interjection. It's our last parts of speech, and before going to define interjection, here we have few examples. All right. So the first sentence is, "Hello, what are you doing there?" Second one is, "Alas, he's dead." Third one is, "Hooray, we have won the game." "Ah, have they gone?" "Oh, I got such a fright." "Hush, don't make a noise." So, can you feel something in these sentences? They are in some respect different from the rest of the sentences that we have discussed for all the 7 parts of speech. There are some in each sentence you will witness a new word is added in the sentence. um, for example, we can say that, what are you doing there, without this word hello. All right, we can still say what are you doing there, but this word adds some sort of feeling and certain expression to the sentence. And these interjections, they are mostly used in
spoken language, but when a writer wants to convey his sudden expressions over something, he can also use interjections. All right. So hello, alas, hooray, ah, oh, hush, all these words, they're interjections. So they are used to express some certain feeling or emotion. All right. And you can see that they're not, as I have mentioned, these are not grammatically related with the rest of the sentence, because we can, for example, we can do it like this. um, for example here, so if we remove this word, have they gone, still it makes a sentence. It's a complete sentence. And uh, though we have removed the word ah, but still it makes a complete sentence. But if we add this word, it shows us some sort of sudden feeling or emotion. It is only used for expressing emotions, and it does not have any grammatical relationship with other sentence. All right. So I have written it here. It is not uh, it does not have any grammatical relationship with the rest of the sentence. All right. So on the basis of these definitions, we can on the basis of these examples given above, we can define an interjection as a word which expresses some certain feeling or emotion. Interjection is a word that expresses certain feeling or emotion. And there's one thing that is very important and that you should keep in mind. बहुत सारे emotions और feelings हमारी और भी होती हैं, जैसे we love our parents and we love our country and we love our religion. वो भी हमारी emotions और feelings हैं. बट उनके लिए हम interjection नहीं यूज़ करते. ठीक है. आप ये नहीं कहते कि oh I love my country और oh I love my parents, right? We don't do that, because those feelings and expressions uh, are not sudden. All right. Those feelings are not sudden. So this word sudden is very important. And all the interjections, they express these sudden feelings. वो जो आपकी फैमिली के लिए आपकी आपका लव आपकी कंट्री के लिए है, वो फीलिंग्स आपकी सडन फीलिंग्स नहीं होती. ठीक है. वो फीलिंग्स आपकी हमेशा से होती हैं. सडन फीलिंग्स वो होती हैं जब आप कोई सरप्राइज्ड होते हैं, कोई बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ अचानक फ़ौरन सुनते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो जो आप बोलते हैं, दोज एक्सप्रेशंस आर बेसिकली कॉल्ड इंटरजेक्शंस, एंड दे आर expressed through different words. There are hundreds of words for different expressions, but I'm going to discuss a few mostly used words. The first one is for joy. So, hooray, hooray, I won the race. Hooray, I won the race. So, hooray shows feeling of joy. All right. Then, feeling of grief. Alas, 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 he's no more. All right. And then, feeling of surprise. Crikey or blimey. There are two words, crikey or blimey. Both can be used to express feeling of surprise. For example, crikey, can you believe the weather? Crikey, can you believe the weather? यानी आप जब बैठे हुए थे घर में, तो यू वर नॉट अवेयर ऑफ द रेन आउटसाइड. यानी आपको नहीं पता था, जब आपको लगा कि मौसम बिल्कुल ठीक है बाहर. But when you suddenly came out of your room and you saw that it was raining cats and dogs, and it was raining jumping toads, so you just it just amazed you. So ये sudden feeling होती है कि यानी आप अचानक देखते हैं कि आपको नहीं पता था पहले कि बारिश हो रही है. लेकिन जब आप बाहर निकलते तो अचानक देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो यू जस्ट से दिस क्राइकी, कैन यू बिलीव द वेदर. यानी आप ये फीलिंग ऑफ सरप्राइज शो कर रहे हैं ये वर्ड क्राई की, कि मौसम, यानी मौसम कितना अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल है. ठीक है. पहले चंद मिनट पहले कुछ और था और अब इतना एकदम ऑल टुगेदर चेंज हो गया है. सो यू कैन नॉट बिलीव द वेदर. सो देयर यू यूज दिस एक्सप्रेशन क्राई ही. ऑलराइट. एंड ब्लाइमी, इसका भी सेम सरप्राइज के लिए यूज होता है. ब्लाइमी, ब्लाइमी, आई कैन नॉट बिलीव द बैड न्यूज़ अगेन. अब यहाँ पे देखें, आपने पहले कोई बुरी खबर सुनी है, तो अब एक और आपको बैड न्यूज़ किसी ने सुना दी है. ठीक है. तो आप उसको भी
यू कैन नॉट बिलीव, बार बार आपको बुरी खबरें मिल रही हैं तो देयर इज समथिंग हार्ड टू बिलीव, राइट? सो there you can also use this expression blimey. So blimey, I cannot believe the bad news again. And then geez, the word is geez. All right, geez is used to show the expression of surprise. ये भी expression of surprise के लिए है. So geez, you scored 90 on the test. ठीक है? So this shows surprise कि आपने इतने अच्छे marks लिए. Geez, you scored 90 on the test. All right. And then here is arg. Arg. All right. Arg expresses frustration or anger. Frustration और anger को express करता है. Arg, this car doesn't work. Arg, this car doesn't work. So यहाँ पे ये feeling of anger बता रहा है कि ये कार खराब हो गई है, अब ये चल नहीं सकती. ये frustration आपकी show कर रहा है. Then oops, whoops and whoops a daisy, ये तीनों सेम ही expressions हैं. You can either use oops, whoops and whoops a daisy. Whoops a daisy is a bit long expression, so people mostly they prefer to use oops or whoops, and this keeps on all they can use it alternatively because they all these three express the same feelings of express the same feelings. और वो जो feelings होती हैं basically वो होती हैं acknowledging slight mistakes. स्लाइट आपसे जो स्लाइट मिस्टेक होती है, छोटी सी कोई गलती हो जाती है, उसको आप जब उसका एतराफ़ करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको मानते हैं कि इट वाज योर फॉल्ट, तो यू जस्ट एक्सप्रेस इट, ऊप्स आई जस्ट रूइंड योर ड्राइंग, कि आपने जो इतनी मेहनत करके ड्राइंग बनाई थी आप, वो मैंने ख़राब कर दी. सो ऊप्स आई जस्ट रूइंड योर ड्राइंग. ठीक है जी. ऊप्स आई just got wet, or oops, somebody uh, threw dirt on my book. ठीक है? और oops, somebody uh, torn my notebook. कुछ भी इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है? तो स्लाइट मिस्टेक्स के लिए whoops oops होता है. ठीक है? सो जैसे आप कंप्यूटर पे मोबाइल पे कोई गलत बटन दबा देते हैं तो वो भी एक स्लाइट सी मिस्टेक है. यानी आप कुछ और फंक्शन में जाना चाह रहे थे और किसी और ऐप में आपने आप उसको ओपन कर दिया, तो आप वहाँ पे भी oops, I just opened up the wrong application. ठीक है? So this is how you can use this expression for acknowledging slight mistakes. All right. Then here's the another one, yippee. Yippee. Yippee is used for joy or excitement. Feeling of joy or excitement. Yippee, I bought the new car. ठीक है? So yippee, I bought the new car. So yippee यहाँ पे आप इसको अगर बिल्कुल हटा भी दें सेंटेंस से, तो आई बॉट द न्यू कार, स्टिल इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग. सो इस वजह से मैंने आपको स्टार्ट में द थिंग आई टोल्ड यू दैट interjections that don't have any relationship with the rest of the sentence. So उसका कोई grammatical relationship नहीं होता. वैसे logical और meaning के लिहाज से relationship है कि वो एक sudden expression और feeling, लेकिन उसका स्ट्रक्चर के लिहाज से ग्रामेटिकल उसका रिलेशनशिप उस तरह से नहीं होता. ठीक है? And then yuck. Yuck. Yuck is the expression you use while eating bad food. जब आपको कोई खाना पसंद ना आए तो you use the expression yuck. Yuck, I don't like this food. ठीक है? Yuck, I don't like this food. Daw. The next one is daw. इसको किस तरह से पढ़ना है? daw. daw के दो फंक्शंस होते हैं बेसिकली. इसके दो फंक्शन हैं. It is used to show annoyance over something obvious or dumb. कोई भी चीज़ जो obvious हो या कोई भी चीज़ जो dumb हो, बहुत ज़्यादा silly हो, बेवकूफ़ाना किस्म का काम हो, उसके ऊपर भी we use daw. So daw, it's very cold in the hilly areas. जो hilly areas होते हैं उनमें बहुत ठंड होती है. ठीक है? तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हिली एरियाज, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्वियस है कि वो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी. सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉ. यानी आपसे कोई आके कहता है कि आजकल तो नारायण का खान में बहुत सर्दी है, तो यू विल से कि डॉ, इट्स
that means you can just use this word da. So that means very obvious that because it's the winter, and um, it is supposed to be, the weather is supposed to be cold in the hilly areas. So there's there is nothing new in this, and there is nothing to be surprised in this. So it's very obvious. Then it can also be used to शो अनॉयंस ओवर समथिंग डम, यानी आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि डम है, बेवकूफ़ाना किस्म का है, खुद ही आपसे कोई इस तरह की गलती हो गई है, तो उसके ऊपर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। डा, आई डिडंट प्लग द चार्जर इन। डा, आई डिडंट प्लग द चार्जर इन। यहाँ पे भी देखिए, अब आपकी अपनी मिस्टेक, आप यानी आपने चार्जिंग पे सेल आप लगाने गए हैं, बट यू डिडंट plug the charger in, so that's something dumb. So you can use da to express this as well. So interjections are also used to give signals sometimes. इनका एक फंक्शन तो हमने ये देखा कि सडन एक्सप्रेशन और फीलिंग बताते हैं। समटाइम्स दे आल्सो गिव अस सिग्नल्स। सिग्नल यानी इशारा किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, shh, please do not talk during the lesson. Shh, please do not talk during the lesson. अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन, ये बेसिकली जो एक्सक्लेमेशन यूज़ हुई है, इट इज़ अ सिग्नल, और ये सिग्नल सबको खामोश कराने के लिए है। बाज़ आपने ख़ुद भी देखा होगा, जब किसी इस तरह की इवेंट में, किसी क्लासरूम में, जब टीचर बच्चों को खामोश कराना चाहे, सो ही कैन ओनली यूज़ दिस एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर ना भी यूज़ करे तो ही कैन ओनली यूज़ दिस एक्सप्रेशन। सो द स्टूडेंट्स they will understand that the teacher wants them to just keep quiet for a while. ठीक है, so this is how the interjections are used in English language. एंड इनके बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ हो सकता है और कॉमा भी यूज़ हो सकता है, इस तरह का कॉमा भी, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ हो सकता है। तो ये हमारे इंटरजेक्शन से स्टूडेंट्स। So students, that's it from today's lecture. In this lecture we discussed interjections. Um, an interjection is a word which expresses some certain feeling or emotion, and we discussed different types of words that express different feelings and emotions. There are a few words that are used to express feeling of joy, grief, surprise, and frustration and anger. All right, and we have almost used each and every expression in sentence, so that will help you understand the actual practical usage of all these exclamations. All right, so that's it, and here this discussion of parts of speech, it ends here, because it was our last parts of speech today. I hope you understood them all, but still if you have any question you can ask your questions. And students, on the basis of this lecture, your homework is write 10 sentences using different exclamations. Like I have used exclamations here: da, yuck, yippee, oops, alas, and all these expressions. So you can use these as well, and there are a lot of other expressions. So what you have to do is to write 10 sentences using different expression, and those expression can be of grief, of excitement, of surprise, of anger, and anything like that. So I hope you that's not a difficult job. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.